रिकॉर्डिंग को तो कर यस सर यस सर Okay. Is it visible to all? Yes, sir. Okay. Good evening, everyone. I am audible or not? Just
check it. Yes, right here I am audible. Yes, sir, audible, sir. First of all, I want to introduce our resource person, Professor Abid sir. He is available here. Good evening. Dear participants, we are delighted to introduce our resource person, Professor Muhammad Abid Siddiqui, a distinguished educator, researcher, and expert in the field of education. Professor Siddiqui's academic journey began with the passion for botany and culminating in the PhD in education from the prestigious Aligarh Muslim University. With a strong foundation in education, Professor Siddiqui's career has been marked by the remarkable achievement and contributions. He started as an assistant professor at Ganjurwara PG College before joining the Department of Education at AMU in 2009. Rising through the rank, he now serves as a professor of education, imparting his extensive knowledge and expertise in the student of AMU. Professor Siddiqui's scholarly pursuit has yielded 3 published books: Secondary School Dropout, Essentials of Guidance and Counseling, and Issue of Challenging of Secondary Education. He has also authored numerous chapters, edited books, and over 35 research papers in reputable nationals and international journals. His dedications to academic and advancement extend beyond the writing as he actively pursued his research at the various national and international seminars and conferences. His academic prose further evident in his supervision of 7 PhD theses and 5 ongoing research scholars, with the additional 25 MA dissertations under his guidance. Professor Siddiqui's area of expertise lie in guidance in counseling, inclusive education, educational psychology, and research methodology. Beyond his academic achievement, Professor Siddiqui has demonstrated exceptional leadership and administrative abilities. He has successfully served as the president of the Gymkhana Galap University Games Committee, placement and counseling officer, and had taken charge over the vital academic responsibilities. As we gather for this workshop on guidance and counseling, we are privileged to have Professor Muhammad Abid Siddiqui as our esteemed resource person. I kindly requested our resource person Abid sir to begin in and enlighten us. Thank you, sir. Yes, Abid sir. Yes, sir. Sir, you are. Thank you very much, Rafiq sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, Rafiq sir. You have said so many words about me, but I would like to state here that I am nothing but a teacher. And today I am going to introduce on a very important topic, which is the demand of the today. Today's very competitive life, not only for the students, but for everybody, because we are engulfed in a number of activities from morning to the evening. Our achievements, we talk about our achievements, we talk about our daily routine things, and we become tensed, anxious, and sometimes frustrated. So let us start my presentation here. First of all, I would like to say this is the topic: significance of guidance and counseling and the role of the teacher. In this particular topic, first of all, I will
try to emphasize why this guidance and counseling is such an important aspect, important aspect in our life. I'm sorry, life. I have collected certain statistics related to that. First of all, I would demonstrate that statistics. Okay, what is the significance of guidance and counseling in the life of the students, in the life of the teacher? We all are educationists or in the field of education, then it is prime responsibility of every research scholar, every teacher to ensure that the mental health of the students, mental health of the teacher should be in such a state that they are working up to their potentials. It should not undermine their significance or their achievements. Let us start this presentation. Present condition of stress. I have collected data. There is a possibility that some data may be changed in every month, but this is the recent data which I have collected from different sources. If we talk about the stress level and the anxiety level, then we find majority of us are either in stress or are in anxiety. Let me tell you first, when I'm talking about the majority of the people are under stress and stress and anxiety, then there are three types of stress and three types of anxiety: moderate, mild, moderate, and severe. If the stress is mild, it is a normal practice to be on stress. Take for example, you all had to join this lecture. Definitely, you have left many assignments and you are associated with this lecture. It is a kind of the stress also. I have to present my paper here or my lecture here. So certain kind of stress is always necessary for the performance. If you're not having a mild stress in your work, then we do not take the things seriously. And if we do not take the things seriously, definitely our performance will not achieve to that level which is expected from us. So mild stress is always necessary. Mild anxiety is always necessary because it stimulates us, it motivates us for doing certain tasks. Because in order to get removed from the stress and the anxiety, we try to finish the task as early as possible. So 77% of Indian population suffering from stress and 88% from anxiety. Let me tell you one more thing here. Okay, stress is the beginning stage, and if stress is continuous and we have not taken the right measure to get removed from this stress condition, definitely it leads to the anxiety. 28% the age group of 18 to 29 years are under stress. This is the stage. Think about 18 years. At the level of the 18 years, students enter in higher education and they stay, if they are conducting the researches, then they stay at up to 29. Or if they are not in the higher education system, then at least they are aspiring certain kinds of the job during this period. It is a very crucial period because at this stage, the people try to achieve their goal, fulfill their aspirations, and they are in a competitive, they have the competitive mind and they try to excel in different areas during this particular stage. The 28% students are under stress. People are stressed. 20% in the age group of 30 to 39. ऐसा नहीं है कि if you have got any job or you have appointed at any particular place, then you will definitely get rid of from the stress and the anxiety. It persists.
also, but it is up to about 20% in the age of 30 to 39 years. 43% employed are under stress. It is a serious condition because these also includes the teachers, women, and the people who are working as in such a conditions where they are not satisfied, जिसको हम कहते हैं कि they are basically performing under stress because they are not satisfied with their jobs or conditions of the jobs. तो job की conditions भी हमें कहीं ना कहीं stress के अंदर डालती हैं. 73% married are under stress because definitely we have to live a life, and in this particular era where everybody has become so status conscious, we definitely try to get the best from the present circumstances, and that leads to stress of many kinds on us. Females are 1.6 times, 7 times more affected as compared to the men because of the social conditions and the traditional look of our society. People living in urban metros are 2.23 times more stressful than the rural areas. ये भी बड़ी common सी बात है. It is quite common because the people who are living in the metropolitan cities, they are under stress because they have to travel long in the morning to their respective job places, and they come back and they live a very stressful life, and definitely the life is very expensive in metropolitan cities, and the social contexts have become very limited, and survival in the metropolitan cities, particularly if you have migrated from small towns or the villages and entered in metropolitan city, then it becomes very difficult to survive over there. That leads to the stress as compared to the rural areas or the small cities. 75% don't feel comfortable talking to a medical professional. सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ पर हमारे यहाँ खास तौर से it is quite common in our country कि 75% people consider कि we should not talk about the doctors or we should not talk about the professionals about our stress and anxiety. They single-handedly try to get rid of from this anxiety, and they hardly share such anxious situations with the friends. Neither they share with the professional because this kind of tendency is not available in our country. However, it is different in Western countries. If you talk about the Western countries, then you will find over there, as we have the family doctors, they have the family counselors also. So mental health is basically not given much significance in our society. Main reason being failure in examination. अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं एग्जामिनेशन में फेलियर होने की वजह से, and they are is under stress because of the low or poor academic achievement. Many are still waiting for their employment, and they are still unemployed, and such kinds of conditions lead to depressions and anxiety. Occupational अगर stress की हम बात करते हैं, I am confining my discussion to the teachers. कि teaching is the most difficult and the challenging profession. Why it is most difficult? Because we are dealing with the students. We are dealing with the human beings, and this human being is the most complicated machine. Most complicated machines. We think, we express, we imitate the sometimes, and we sometimes hide many things. So our personality is so complicated, and it is very difficult to understand the personality of the human beings. That is why the teaching is the most difficult and the most challenging profession, because you are dealing a heterogeneous class where students having the different potential, different aspirations, different socioeconomic status background, and different academic levels, academic background level, they are studying in the same class. And our objective as a teacher is to teach them up to their potentials by involving them in our classroom. That is not a simple task, rather
That is the most difficult task. And if we talk about the stress level, the 20% teachers feel extremely tensed about their jobs. They may be the women, they may be located in any area where their job satisfaction level is not there. Many researches have been conducted in this area, and they have elaborated many reasons for job satisfactions. Administrative responsibilities, and if we look to the teachers, whether at school level or secondary school level or higher education level, much of the tasks is related to the administrative in addition to the teaching. हम लोग यहाँ पर हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं. University is basically run by the teachers. There are many responsibilities on the teachers, and at higher education level also, at school level, in addition to teaching, they have to engage in so many activities. And sometimes government also engages the teachers at primary level in many government policy tasks that becomes very tiring and very tenseful for the teachers. Organization of various programs, जैसा कि मैंने आपको बताया, preparing and sending reports. आजकल reports का जमाना है, and reports are being asked online. तो and कोई भी सर्कुलर आपके हेड की तरफ से आपके पास आता है, if you are a teacher, and you have to immediately prepare the report and send it. So these are the stressful situations. Parental expectations are also high. Parents expect everything. When they send their children to the schools and the university, then they expect every responsibility from the institution. उन्हीं से वो उम्मीद करते हैं कि सारी caring, educational development and personality development should be ensured by the educational institutions. और जब educational institutions पर expectations आती हैं, definitely teachers are also under stress. तो parental expectations भी बहुत ज़्यादा हैं. Institutional expectations are also there because we are living in a competitive era where one educational institution is trying to present it as the best institution, and ultimately teachers are supposed to perform this great task to give the height to that institution. अब उस institution की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए टीचर्स पर वर्क ज्यादा होता है, वो भी स्ट्रेस में. फैमिली का भी प्रेशर्स होता है कि इफ यू आर ओवर engaged in educational activities and institutional activities and you are not giving sufficient time or balanced time to the family matters, definitely that is also become stressful for the teachers. Promotion related issues, job insecurity, private educational institution. If someone is working in private educational institution, there is no job security. Salaries are not sufficient, and tasks is quite laborious. Do not do work beyond office hours. हालत ये है कि you have to work in the institutions, and after that you have to stay for longer hours, or you are expected to perform some more work over there. I have given you the overview of how the students are under stress and how the teachers are under stress. Teachers are also in stressful conditions. If the teachers are also in a stressful condition, there are certain responsibilities on the organizer of the schools and the principals of the schools to act in such a manner that these teachers are not behaving in a stressful manner. Similarly, if students are under stress, then we have to take care as an institution, as a parent, and as a responsible member of the society to do something or to do positive efforts to bring or to ensure better mental health of our student, because the achievement of the students depends upon the mental health. If you are not mentally healthy,
मेंटल हेल्थ कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं, एंजाइटी में नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं है, एंड यू आर लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ, दैट इज कॉल्ड ए मेंटली हेल्दी पर्सन. यू आर शोइंग द साइन ऑफ एडजस्टमेंट, you are not showing the sign of the maladjustment. That condition is called the better mental health. और अगर mental health सही नहीं है, if anybody's mental health is disturbed, definitely it is a clear cut case of the guidance and counseling. Then intervention of the guidance professionals or the counselors need to be engaged. उनको engage होना पड़ेगा. और ये फैसिलिटीज हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो फैसिलिटीज हैं, ये इंस्टीट्यूशंस के अंदर, स्कूल के अंदर, इन ऑल स्कूल्स, इन ऑल एजुकेशन कॉलेजेस, इन ऑल यूनिवर्सिटीज, वी हैव टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज. ये अब इन चीजों को मेरा बताने का मतलब ये था कि इन सच ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम ये कहते हैं कि द स्टूडेंट्स मस्ट अचीव अप टू देयर पोटेंशियल्स. So if they are not achieving up to their potential because of the stress, because of the anxiety, because of the frustration, then we have our all efforts, that is appointment of the teachers, establishment of schools, and engaging in teaching learning activities go in vain. सब बेकार हो जाता है अगर स्टूडेंट का अचीवमेंट नहीं आता है. That is why, in addition to the better teacher to teach, in addition to the better infrastructure in the schools for comfort of the student, it is also essential that guidance and counseling services must be available in each educational institution from lower level to the higher education level. Because we are talking about the achievement of education. And achievement of education, what is the aim of education? Aim of education is all-round development of the individual personality. All-round development, that is cognitive development, affective development, and psychomotor development. In a simple words, we can say intellectual development, physical development, emotional development, psychological development, and spiritual development. All capabilities of the individual must be developed to its capable limit. That is called the aim of education. If students are not, so guidance and counseling basically assist in that. I will come to that later on. First of all, let us understand what is the role of the guidance and counseling. Guidance is an organized set of specialized services meant for achieving the objectives of education. गाइडेंस एंड काउंसलिंग का काम क्या है? द टास्क ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू असिस्ट द टीचर्स, असिस्ट द पेरेंट्स, असिस्ट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, असिस्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज to achieve the objectives of education, that is all-round development of individual personality. Guidance enables each individual to understand his or her abilities, to develop them as far as possible, to relate them to the life goals, and finally to reach a state of complete and mature guidance. ये गाइडेंस का एक बिल्कुल क्लियर कट पर्सपेक्टिव है. गाइडेंस करता क्या है? व्हाट इज द टास्क ऑफ द गाइडेंस? गाइडेंस का टास्क ये है कि गाइडेंस इनेबल्स और इट असिस्ट द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ. जब हम अंडरस्टैंड की बात करते हैं हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इसका मतलब यह है कि वी शुड नो आवर कैपेबिलिटीज, or in other words we can say कि we should know the strength and weaknesses of us. हमारी जितनी भी weaknesses हैं, जो strength हैं, वो हमें पता होना चाहिए. और जो टैलेंट हमारे अंदर है, we have to develop that talent to the maximum possible limit. अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का अचीवमेंट हाई आना चाहिए. ठीक है, वो उसका अचीवमेंट अंडर अचीवमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए. और जो एबिलिटीज हैं उनको लाइफ गोल से कोरिलेट करना, सो दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू टेक देयर सेल्फ गाइडेंस. द टास्क ऑफ द गाइडेंस इज जस्ट टू मेक द स्टूडेंट अवेयर अबाउट देयर कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल्स, इंटरेस्ट, and correlate those
interest and capabilities with the employment opportunities or opportunities of education available in the market, and expect the students to take their decision. स्टूडेंट को ये बताना कि आपके अंदर कौन कौन सी काबिलियत हैं, उन काबिलियत से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो आप अपनी पसंद से अच्छे अंदाज से खुशी के साथ कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यही गाइडेंस है। गाइडेंस इज ए सर्विस मीन्ड फॉर ऑल एंड इट इज ए कंटिन्यूअस सर्विस। लोग ये समझते हैं कि गाइडेंस सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो अंडर अचीवर हैं, जिनका अचीवमेंट कम आता है, जो थोड़ा सा माल एडजस्टमेंट के साइन शो करते हैं। नो, इट इज नॉट, इट इज गाइडेंस इज बेसिकली नीडेड फॉर ऑल। आप और हम अपनी जिंदगी को अगर देखें, इफ वी एनालाइज अवर होल लाइफ, देन वी विल फाइंड कि इट वाज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव अस इन दिस वर्ल्ड विदाउट द गाइडेंस। इंसान इतना इंटेलिजेंट है, बट in the beginning years of the human lives are highly parasite on their mothers, on their father and the nearest and the dearest people. So it is a continuous process. जिंदगी के हर स्टेज के अंदर हम लोग प्रोफेसर्स हैं, हमें भी गाइडेंस की जरूरत है। आप लोग इस स्टेज पर हैं, आपको भी गाइडेंस की जरूरत है। एंड वी नीड गाइडेंस एट एवरी जंक्शन। गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि कोई आपको बताए, यू आर रीडिंग ए बुक and you have got an idea, that becomes a guiding source for you. You're reading an article, you are interacting with any person and you are talking to them, he or she is giving any tip for you. You're reading out your religious books, script, and you got some idea from that. तो गाइडेंस के कहाँ से आता है? Nobody knows about that guidance. And experience makes us important in लीडिंग अवर लाइफ। ये जनरलाइज भी है और स्पेशलाइज भी है। जनरलाइज क्या है कि आप भी गाइडेंस दे सकते हैं, मैं भी गाइडेंस दे। स्पेशलाइज क्या है कि अगर आपको काउंसलिंग देनी है तो आपको जो है एक ट्रेनिंग की जरूरत होगी, जैसे एक टीचर को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसी तरीके से ये स्पेशलाइज सर्विस भी है। देयर आर सर्टेन एक्शंस व्हिच आर टेकन इन ए सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोवाइड द गाइडेंस। अब गाइडेंस ये था। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग गाइडेंस की नेक्स्ट स्टेज है। काउंसलिंग इज ए लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस कैरीड आउट इन ए सिंपल one-to-one social environment between counselor and the client. गाइडेंस तो टीचर भी दे सकता है, थोड़ा सा गाइडेंस टीचर दे सकता है, लेकिन काउंसलिंग टीचर नहीं कर सकता, बिकॉज टीचर्स आर नॉट सपोज्ड टू बी द काउंसलर्स, दे आर बेसिकली द टीचर्स और दे आर ट्रेन्ड इन द टीचिंग प्रोफेशन। फॉर काउंसलिंग वी नीड काउंसलर्स हु आर इन नीड ऑफ गाइडेंस। किनको गाइडेंस की जरूरत होती है, किनको काउंसलिंग की जरूरत होती है? Students suffering from stress, anxiety and depression. It is the responsibility of the institution to identify who are under stress, who are suffering from anxiety, who are in a condition of depression. Teachers की responsibility है, guidance and counselor की responsibility है, principal की responsibility है कि they have to identify who are the sufferers, because if they are sufferers, they are not able to concentrate on their education. If they are not able to concentrate, then they will not be able to achieve their target. If they will not be able to achieve their target, definitely the aim of education will not be achieved. Consistent record of underachievers. कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि they are having the better IQ level, but they do not achieve up to that IQ level. उसको कहते हैं underachiever. कि आपका अचीवमेंट जाना चाहिए था 90% तक because of your IQ level, but you are not, you are performing like an average student, or any student is performing like an average student. That is called underachievement. Scholastic achievement drops suddenly. बच्चा स्टूडेंट जो है बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, 7 तक, 8 तक, 9 तक, 10 तक जाकर के बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी, एंड सडनली हिज स्कॉलिस्टिक और एकेडमिक अचीवमेंट ड्रॉप्स। एकदम से एक ड्रॉप होने का मतलब यह है कि देयर आर सर्टेन अदर कंडीशंस रादर देन IQ और अदर IQ और
institutional problems. Isolated और neglected student, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लासरूम के अंदर कि they live solitary, they do not interact with other students, they enjoy their isolation, they are in daydreaming, they are present physically but they are absent mentally over there. Such, because human beings are the normal, these are not the characteristic features of the normal person. If such students or the people showing this kind of attitude, it means they are suffering from some certain kinds of the problems. They also need guidance. Use exhibitionism for gaining attention. बहुत छोटे बच्चों को में ये ज्यादा होता है कि वो, आपने देखा होगा कि माँ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि दे ट्राई टू गेट द अटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स, अटेंशन सीकर कहलाते हैं उनको, कि दे आर नॉट नॉर्मल पर्सन और नॉर्मेलिटी से थोड़ा सा हट जाते हैं, इस वजह से वो ये चीजें करते हैं. Having adjustment problem, there are so many students who do not adjust in the classroom. They face difficulty in adjusting with the opposite sex, and they face difficulty in adjusting to social situations in the gathering. So such kinds of students also need guidance. And some students are there who suddenly take decision to drop out from the schools or colleges. अच्छे खासे पढ़ रहे थे, एकदम से वो डिसीजन लेते कि आई विल गिव अप माय स्टडी एंड आई विल नो लॉन्गर बी ए स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड आई विल एंगेज इन सम अदर. इसको कहते हैं विड्रॉल की कंडीशन. इसको हम कहते हैं कि ड्रॉप आउट्स मींस कि यू आर नॉट बेसिकली फेसिंग द चैलेंज एंड यू आर गिविंग अप and giving up from the conditions or from the situation is not a normal activity. It is something related to problems. ऐसे भी स्टूडेंट को गाइडेंस की जरूरत है. कुछ स्टूडेंट की बिहेवियर की प्रॉब्लम होती है कि उनके बिहेवियर एग्रेशन के अंदर होते हैं और इरिटेशन उनके अंदर होता है. बहुत ऐसे लोगों को भी, और गाइड करने के बाद, वार्निंग देने के बाद भी वो इस सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते. क्लासरूम के अंदर डिस्टर्बेंस करते हैं, बिहेवियर की उनकी प्रॉब्लम. दे आर नॉट बेसिकली लिसनिंग टू द guidelines given by the teachers. They create indiscipline in the classroom and they are basically quarrel with other students who display unusual ability. कभी कभी जो unusual ability वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनको हम talented कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि they are the brilliant student, they are the creative student, they also need in guidance and counseling, because our education structure presently in our country is not in a position to provide the space for the talented and the creative people. हमारे यहाँ जो largely लोग पढ़ाते हैं वो average लोगों को पढ़ाते हैं. स्लो लर्नर को हम इग्नोर कर देते हैं, और जो टैलेंटेड होते हैं उनको ये समझते तो इनको सब कुछ आता है. बट these talented or unusual ability persons are basically the leaders. They are the leaders. They are the innovators. They are the researchers. They are the educationists. Then we have to groom their personality so that they are giving up or they are producing the knowledge in their respective areas. उनको leaders उनको बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है. इस वजह से उनको गाइडेंस की जरूरत होती है. An adolescent is supposed to be a period full of problems, and definitely at this stage, जिसको हम teenage कहते हैं, they encounter a number of problems. Because it is a stage which is supposed to be the difficult stage for the students. We need to understand. Parents do not understand. Teachers do not understand. Our society doesn't understand about their problem. We have to create awareness related to that, and they also need guidance. First generation learners, they have the talent, but nobody is here to guide them at their home, in their locality. They also in need of the guidance. Students suffering from motivational problem. कुछ लोग होते हैं, talent तो होता है, they have the talent, लेकिन motivation कहीं ना कहीं कमी होता है. और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अपनी लाइफ में भी आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, स्टूडेंट की लाइफ में भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि मोटिवेशन इज बेसिकली इज द की ऑफ सक्सेस. Even if you are having the average IQ level,
If your motivation level is high, definitely we are able to perform beyond our potentials. हम अपने पोटेंशियल से ज्यादा काम कर लेते हैं अगर हमारे अंदर मोटिवेशन होता है. कुछ लोगों के अंदर मोटिवेशनल की प्रॉब्लम होती है, एबिलिटी है लेकिन मोटिवेशन नहीं है, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट है. हिंदी मीडियम से पढ़ करके आया है, इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का हिस्सा बन गया है, टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, लेकिन अपने आप को कम समझ रहा है, अपने आप को इंफीरियर समझ रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग द कैपेबिलिटीज. लो एस्पिरेशन लेवल, कम कम अपने जो गोल्स हैं, बड़े छोटे गोल कर रखे हैं उन्होंने, बड़े छोटे गोल्स को डिसाइड करते हैं. दे सेट अ वेरी लिमिटेड गोल्स एंड दे डू नॉट सेट द गोल्स अप टू देयर पोटेंशियल. लो कॉन्फिडेंस लेवल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, निगेटिविटी एटीट्यूड के अंदर आ जाती है और इंटरेस्ट उनका लूज कर जाता है. आपका अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट पुअर है तो क्या होगा, एस्पिरेशन लेवल भी पुअर होगा, और जब एस्पिरेशन लेवल पुअर होगा तो कॉन्फिडेंस का लेवल भी नीचे होगा, और जब कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे होगा तो नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव टेंडेंसी विल रिफ्लेक्ट इन द टेम्परामेंट एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू द पुअर इंटरेस्ट. और जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो व्हाट टू एक्सपेक्ट एजुकेशनल अचीवमेंट. फर्स्ट जनरेशन लर्नर यहाँ पर रिपीट हो गया है, इसको इग्नोर करिए. डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर डिफरेंटली स्टूडेंट्स हु कहते हैं विजुअली चैलेंज, हियरिंग इम्पेयर्ड, लर्निंग डिसेबल्ड, इमोशनली डिस्टर्ब. These are the students, and we are talking about the inclusive education in present society. Inclusive education means that these students will also study in the same class. If they will study in the same class, then they will come with their own problems and issues, and we need to provide guidance and counseling to them also, to the teachers also, and to the other students who are receiving education with them. हमें उनके लिए भी गाइडेंस का अलग से माहौल बनाना होगा. That is the need of the guidance and the counseling. Students from marginalized sections of the Indian society, scheduled castes, scheduled tribes, and the educationally or economically or socially backward minorities, sometimes people from rural areas, sometimes people who are coming from such educational institutions where quality education is not received by them, उनको भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत होती है. लैंग्वेज इश्यूज का मैंने अभी आपको बताया, ये यूनिवर्सिटी लेवल पर ज्यादा होता है कि आप हिंदी मीडियम स्कूल से करके आते हैं एंड यू हैव टू एंटर इन द इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन, then we face difficulty to adjust to the change medium of instruction. In such circumstances, we also face difficulty, that is the stress and the anxiety. Poor life skills. आज के दौर के अंदर, if any student wants to get success, then life skills, in addition to the academic achievement, life skills are equally important. Communication. We should learn how to communicate our ideas. Collaboration. आप इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते दुनिया के अंदर, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आर नीडेड. ये छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है आपके सामने. इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट मेकिंग कोलैबोरेटिव एफर्ट्स. आपकी एफर्ट्स इसके अंदर लग रही है, ऑर्गेनाइजर्स की लग रही है, और मेनी पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दैट. इंडिपेंडेंट वर्क, ये भी इंसान को आना चाहिए कि कोलैबोरेशन भी आना चाहिए, और अगर इंडिपेंडेंट काम करने का जज्बा है वो भी आना चाहिए कि वी शुड बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म आवर टास्क इंडिपेंडेंटली. क्रिटिकल थिंकिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिटिकल थिंकिंग, यू आर क्रिटिसाइजिंग. Criticizing means you are trying to find out the faults, weaknesses of any program. If you are not aware about the weaknesses, then how will you improve upon that? Decision making ability भी होनी चाहिए. We have to face many situations in our life where we lack decision making power. हमारे student decision making power में बड़े poor हैं. They take guidance from their parents. Very few students are demonstrate independent ability to take the decisions. टेक्नोलॉजिकल स्किल भी आना चाहिए. आप टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते. Nobody can get rid of from the technology. कि हम एज ओल्ड है. Yes, you are age old, and there will be a difference between our
handling of technology and technology of the young person, but we have to engage it at least up to working ability, creativity and problem solving skills. Creativity भी बड़ी important है आज के दौर के अंदर कि how do you present the things in a different manner, out of the box solution हम जिसको कहते हैं. आपकी फ्लुएंसी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपकी नॉवेलिटी क्या है आइडियाज की, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन स्किल्स जिसको हम कहते हैं, ये लाइफ स्किल्स हैं. These, if students are suffering or lacking in these life skills, they also need guidance and counseling services. अभी आता है why guidance and counseling services. वो तो आपने इतने सारे को ढूंढ लिया कि इनको गाइडेंस क्यों देना चाहते हैं हम, गाइडेंस काउंसलिंग, because we are interested in total development of the students, their intellectual development, social development, emotional development, psychological development, better adjustment, better achievement, better progress, better self aspect, better aspiration level. इस वजह से this is तो जब इस वजह से गाइडेंस देना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, गाइडेंस इज एन असिस्टेंस given to the student for their total development. गाइडेंस की और कहां जरूरत पड़ती है, proper choice of careers. Students are not aware about the careers. We need to provide information about different careers. हमारी सोसाइटी के अंदर दो तीन चीजें जानते हैं स्टूडेंट, इंजीनियरिंग को जानते हैं, मेडिकल को जानते हैं, IAS PCS को जानते हैं, कुछ लोग MBA के बारे में जानते हैं. They are not aware about the different professions because such kinds of lectures, such kinds of programs are hardly available in our educational institutions. बहुत कम लोगों को पता होता है चॉइसेस उनकी क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, उनको कैसे गाइड किया जाए डिफरेंट एरियाज के अंदर. बिकॉज हैप्पीनेस इन वर्किंग, इन रीडिंग, इन अचीविंग प्रोग्रेस कम्स when we are placed in the right areas. अगर कोई टीचर बन जाता है और उसका टेम्परामेंट टीचर का नहीं होता है तो he or she spoils the life of the students because he or she has entered in a wrong profession. इसी तरीके से गाइडेंस एंड काउंसलिंग के में आप जाना चाहते हो और खुद आप स्ट्रेस के अंदर हैं, खुद आप एंजाइटी के अंदर हैं, खुद आपका डिप्रेशन का लेवल बहुत हाई है, then how can you expect to provide guidance and counseling? Selection of courses is also very important, very important. हम लोग हायर एजुकेशन में हम देखते हैं टाइम की पॉसिटी है. मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ले रहे हैं and what will be the feasibility of these subjects in the future and where we can, if these subjects will make a break on us, what is the need of the hour, what is in which area I will be more successful, more comfortable. जबरदस्ती हमारे हम माँ बाप जो हैं बच्चों को साइंस पढ़वाते हैं, उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता, जबरदस्ती हम उनको मेडिकल में भेजते हैं, जबरदस्ती उन पर मैथमेटिक्स को थोपते हैं. तो choices are very important and choices must be made according to their interest. Placement in the next stage of education and training, इसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत होती है. आपने देखा होगा कि इंटरमीडिएट के बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट एंटर होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर वो आ जाता है बिकॉज ही और शी इज नॉट अवेयर अबाउट द लाइफ ऑफ द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी की लाइफ बिल्कुल फ्री लाइफ होती है, डिफरेंट फ्रॉम स्कूल. स्कूल इज जस्ट लाइक ए प्रिजन. 8 बजे आप एंटर हुए और 2 बजे के बाद वहां से आप निकल रहे, उससे पहले आप निकल, टीचर भी वहां पर प्रिजन के अंदर होते हैं. लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ इज फुल ऑफ फ्रीडम. उस फ्रीडम को कैसे कितना एंजॉय आपको करना है, दैट इज आल्सो रिलेटेड एन इशू टू द गाइडेंस एंड काउंसलिंग. उसमें बहुत सारे लोग बिल्कुल डेविएट हो जाते हैं अपने गोल से एंड दे बिकम अंडर अचीवर्स ओवर देयर. इंप्रूवमेंट ऑफ स्टडी हैबिट्स, इसकी भी जरूरत है. पीपल आर हैविंग द टैलेंट लेकिन जानते नहीं है कैसे तैयारी की जाए, जानते नहीं है स्टडी हैबिट किसको कहते हैं. 4 घंटे बैठ करके पढ़ना जरूरी नहीं होता है, 2 घंटे बैठ करके पढ़ने से अगर आपका काम हो सकता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू टेल दीज ट्रिक्स टू अवर स्टूडेंट एंड दीज थिंग टू अवर स्टूडेंट. मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ, मेंटेन कैसे करें मेंटल हेल्थ को, कैसे हम डिवाइड करें अपनी चीजों को, मैनेज करें.
लर्निंग आवर्स को, टीचिंग आवर्स को, ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को, आउटडोर की एक्टिविटीज को, आप देखिए मेंटल हेल्थ इज डिस्टर्ब because of the mobile phone today. Lot of material is available and there is no reliability of that material, whether it is true or not, but we are getting that material and that is disturbing to our mental health also. We have get rid of from outdoor activities. हमारे दौर में और हमारे बच्चों के दौर के अंदर बहुत बड़ा फर्क है. हेल्पिंग फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, टैलेंट है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर के अंदर है, गाइडेंस देने वाला नहीं है. We need to provide guidance in the school situation to such students. How to proceed, how to study, how to manage time, and how to set the goal. Adjustment to heterosexual relations, ये भी बड़ी important बात है कि people hesitate to mix up with the opposite sex. It means there is something in their mind, and they have a difference between the male student and the female student. Mixing का मतलब ये होता है कि you are comfortable in exchanging your ideas, sharing your views, making collaboration with each other, engaging on a project simultaneously, preparing the assignment unitedly. इतने सारे काम हम लोगों बच्चों को करने चाहिए. ये एडोलेसेंट की स्टेज पर ये प्रॉब्लम बच्चों के अंदर ज्यादा आती है. गाइडिंग द टैलेंटेड एंड द क्रिएटिव स्टूडेंट्स, दे आल्सो नीड गाइडेंस. उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होंगे गाइडेंस के लिए. क्यों? कि their remembering is faster, their learning is faster than others. They are engaging in such problematic situations and they enjoy in that. We have to create situations for that. उनके लिए अलग शेड्यूल बनाना होगा, उनको अलग से गाइड करना होगा. टीचर को भी ये बताना होगा. इस लेक्चर का मकसद ये है कि हमें ये पता चल जाए कि what is the significance of the guidance and counseling in the life of the people. Helping the differently able student, उन differently able student को assist करने के लिए हमें विजुअली चैलेंज पर्सन है, उसको कैसे गाइड करें. हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन है, उसके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है, उनको कैसे डील करें क्लासरूम के अंदर. There are so many students who face difficulty of adjustment with the peers, with the teachers and the parents. वो डिफिकल्टी फेस करते हैं. We need to provide them assistance. उनके मोटिवेशन लेवल को हमें एनहांस करना होगा, उनके लाइफ स्किल्स को हमें डेवलप करना होगा और रिसर्च के ओरिएंटेशन को डेवलप करना होगा. एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, इन सब का क्या रिजल्टेंट फैक्टर क्या आएगा कि इफ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ low self-concept and aspiration level, if you are guiding the talented and the creative student, if you are helping the differently able student, if you are providing better adjustment to the student related to peers, teachers and the parent, if you are enhancing their motivation level by making different utilizing different tricks, then and developing their life skill, then their quality of education will automatically improve and they will achieve up to their potentials. Role of the teacher, ये भी बड़ी समझने की जरूरत है कि what is the role of the teacher in guidance and counseling. मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि teacher can guide but teacher cannot provide counseling. It should be clear in our mind कि teacher can help to the student but teacher cannot provide the counseling. Teacher counseling provide नहीं कर सकता है, teacher guide कर सकता है. Student is facing problem, educational कोई problem है, study habit उसकी बेहतर नहीं है, कोई book अच्छी वो पढ़ना चाहता है, कोई कंटेंट आपसे मांगना चाहता है, आप उसको गाइड कर सकते हैं, आप उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको बता सकते हैं. बट काउंसलिंग क्या है, दैट इज रिलेटेड टू द बिहेवियर प्रॉब्लम. जब सीरियस प्रॉब्लम होती है और काउंसलिंग की उसको जरूरत होती है, दैट काउंसलिंग इज डन इन अ 1-to-1 सिचुएशन एंड दैट इज नॉट द टास्क ऑफ द टीचर. उस कंडीशन में टीचर का टास्क क्या है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ. देखिए, टीचर बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव टीचिंग. आपको एक पूरा लेक्चर इसमें सुनने को मिलेगा
कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। उस टीचर को, उस लेक्चर को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हाउ आई रोट दिस पॉइंट, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं कि द टीचर इज टीचिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स and engaging the students in learning process, motivating them, asking creative questions and guiding them to achieve the success. उनके मोटिवेशन लेवल को हाई करना, उनको एंगेज करना, क्लासरूम के अंदर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और स्टैंडर्ड क्लास का बढ़ा करके पढ़ाना, दैट इज कॉल्ड द प्रोवाइडिंग इफेक्टिव टीचिंग। कि आप अपना कंटेंट भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट के मोटिवेशन का भी ख्याल कर रहे हैं, उनको आप रीइंफोर्समेंट भी दे रहे हैं, उनको एंगेज भी कर रहे हैं। यू आर टीचिंग बाय यूजिंग बेटर टीचिंग एड्स। इन दीज थिंग्स आर enough to provide or to solve many problems which lead to stress and anxiety. अच्छे टीचर की क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और बच्चों के स्ट्रेस कम रहता है, एंड स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल विद द टीचर who provides quality teaching or the effective teaching in the classroom. Noting vocational possibilities of various subject areas. जो भी टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है, the teacher must know the job opportunities in that area. अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ाता है तो द टीचर, मैथमेटिक्स टीचर शुड टेल टू द स्टूडेंट्स ओकेजनली, कभी न कभी पूरे साल के अंदर, 2 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा बताते रहना चाहिए कि if you will engage in the mathematics, then mathematics will lead to certain areas. मैथमेटिक्स से बीएससी ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोगों को पता नहीं होता कि मैथमेटिक्स में जॉब कहाँ से मिलती है, साइंसेज में जॉब कहाँ से मिलती है, आर्ट्स के सब लैंग्वेजेस में कहाँ हमें जाना होता है, एमएड की क्या सिग्निफिकेंस है, नहीं मालूम होता। देयर पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वट एवर सब्जेक्ट यू आर टीचिंग, यू शुड टेल द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। This is my paper and I'm telling you the significance of the guidance and counseling, and it is things that will definitely be clear, or certain doubts I will be able to clear of yours. Demonstrating genuine interest in students. बच्चों के अंदर इंटरेस्ट, ये टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ये टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीचर का एक ट्रेट है, जिसको हम कहते हैं ये टीचर का एक ट्रेट है कि डिमॉन्स्ट्रेटिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। एक तो होता है टीचिंग स्टूडेंट्स विद इंटरेस्ट, और एक ये होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि यू आर अवेयर और इंटरेस्टेड इन लुकिंग हिज और हर परफॉर्मेंस, हिज प्रॉब्लम्स और हर प्रॉब्लम, बच्चों के, स्टूडेंट के इश्यूज, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी कंसर्न्स, उनके पेरेंट्स की कंसर्न्स, उन सब के अंदर एक जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। फ्रॉम विच फैमिली दे आर कमिंग, वेदर रूरल एरियाज, पुअर फैमिली, and concept of the teacher must be clear. If the person is coming from the poor family, definitely he might be facing certain problems in the issues, because poverty is the mother of all problems. Mother of all problems. जो पॉवर्टी को फेस करते हैं, they can understand only how much mental health is disturbed of the students because of their family poor socio-economic status. Analyzing physical, emotional, social and educational needs of the people in the classroom. उनकी फिजिकल नीड को भी अलाउ करना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि मैंने आज 3 घंटे तक बच्चों को पढ़ाया। You cannot teach for 3 hours. Neither the students can learn for 3 consecutive hours. आपने पढ़ाया होगा, आपका स्टेमिना है, बच्चों का स्टेमिना नहीं है लिसनिंग का, अंडरस्टैंडिंग का नहीं है। व्हाई आर यू कंपेलिंग देम टू सिट फॉर 3 कंटिन्यूअस आवर्स एंड स्टडी? आपको उनकी फिजिकल स्टेमिना का भी ध्यान रखना होगा। सम पीपल आर फिजिकली स्ट्रांग, सम आर फिजिकली वीक। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस डिफरेंस आल्सो। इमोशनल एस्पेक्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इमोशनली भी उनको टैकल करना है। सम पीपल आर इमोशनली, students are emotionally stable,
कुछ इमोशनली इमेच्योर होते हैं, कुछ लोग सोशल होते हैं, कुछ अनसोशल होते हैं, कुछ की एजुकेशनल नीड्स कम होती हैं, कुछ की ज्यादा होती हैं. तो इफेक्टिव टीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टेकिंग स्टेप टू सॉल्व दैट. क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ाते हो तो मेनी थिंग्स कम इन अवर वे. कुछ तो बच्चों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, कहीं ना कहीं आप हमें वी समटाइम्स वी फील कि दिस एस्पेक्ट आई मिस्ड एंड आई विल कम टुमारो एंड आई विल टेक ओवर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट व्हिच आई मिस्ड टुडे. एनकरेजिंग अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट. अगर बच्चों का अचीवमेंट आ रहा है तो आप उनको इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट मींस कि अगर आप बच्चों की रेस्पॉन्स पॉजिटिव है, टेक फॉर एग्जांपल यू आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट एंड इफ एनी स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर देन डेफिनेटली द टीचर शुड से सम गुड वर्ड्स फॉर हिम. वेरी गुड, this was the answer which I was expecting from you. You are really a good student. Very nice, excellent answer. It's extraordinary. These are some of the words which the teacher can use and these words are quite fascinating. आप खुद देखिए कि अगर आपको 4 लोग सुबह से शाम तक आपकी तारीफ कर देते हैं तो you have a positive image of that person in your mind. छोटी छोटी चीजें होती हैं and they are very influential in making better adjustment. Serving as planning committees. बहुत सारी कमिटीज होती हैं कॉलेजेस के अंदर, आप उसके मेंबर बनिए. यानी कि हमें बीइंग ए टीचर वी शुड नॉट get rid of मैं तो I will only teach and I will not engage in any other activities or any committees. These committees are meant or these services are meant for the betterment of the student. कहीं पर आपकी काउंसलिंग सर्विसेज हैं, कहीं पर स्पोर्ट्स की सर्विसेज हैं, कहीं पे हेल्थ की सर्विसेज हैं, कहीं पे आपकी और दूसरी सर्विसेज अवेलेबल हैं स्कूल के अंदर. तो ये सर्विसेज के अंदर भी टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. परफॉर्मिंग ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज simplest method है ग्रुप गाइडेंस का कि there are so many problems which are quite common among many people. कैरियर के बारे में, इंजीनियरिंग के बाद क्या ऑप्शंस हैं, इंटरमीडिएट के क्या ऑप्शंस हैं. We can arrange the lecture of some experts in the educational institution and students can be given the knowledge of the different occupations, different professions over there. Extending support to parents. ये कभी कभी ऐसा लगता है कि साल भर में एनुअली a function must be organized by the school authorities to provide guidance to the parents. These parents are not aware about their abilities and the capabilities of their student and they are not aware about how to provide them guidance. तो इनको सपोर्ट को एक्सटेंड करना, दिस इज वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स. ये टीचर्स के रोल के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू कि टीचर का रोल सिर्फ इज नॉट कन्फाइंड टू द क्लासरूम, रादर हिज रोल इज वेरी एलेबोरेटेड, वेरी एक्सपेंडेड एंड it is not only confined to the schools, rather it is related to the social aspect also. Identification of the student's potential. The पहली responsibility of teacher की to know the student. 3 तरीके के student होते हैं: above average, average, below average, high aspiration, average aspiration, low average, high self concept, average self concept, low self concept, and adjustment also. So identification of the student potential is also the responsibility of the teachers in order to provide the guidance. Being accessible for student. बहुत सारे टीचर बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते. They do not become accessible to the student. Don't talk to me in the classroom. I will not meet to you. No, the teachers are the friends of the students. Teachers must demonstrate love and affection to the students. और जो बॉन्ड बनता है, आप उसको, अगर आप टीचर हैं और आपको टीचिंग करने का मौका मिलता हो और या मिलेगा फ्यूचर में, अगर कुछ आपके लोग टीचिंग में नहीं जाना चाहते, तो उनको अंदाजा होगा कि व्हेन यू मेक ए बॉन्ड विद द स्टूडेंट, that becomes very fascinating and you also enjoy that. बॉन्ड जो होता है बड़ा अजीब व गरीब होता है, उसको आप
जो है बयान नहीं कर सकते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द सोसाइटी आल्सो। मेकिंग स्टूडेंट्स रेफरल, आखिरी चीज जो मैंने आपको बताई कि आप सारे काम करने चाहिए टीचर को, टीचर मस्ट डू a lot of activities, but the teacher should also know his or her limitations also। जैसे डॉक्टर होता है, छोटा डॉक्टर होता है, जब वो सीरियस मरीज उसके पास आता है तो उस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उस मरीज को इमीडिएटली किसी एक्सपर्ट्स के पास, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास रेफर कर दे। यस, वी शुड डेफिनेटली सॉल्व एजुकेशनल adjustment problems of the student, social problems of the student, course related problems of the student, but there are certain unique problems which are related to the personal domain of the student। high stress conditions हैं, isolated candidate है, irritability उसके अंदर develop हो गई है, तो ऐसे cases को, in such types of cases the teacher should not indulge in solving such issues, because these are the purely cases of the guidance and counselors, and we must refer to such cases to the guidance and counselor। किसी भी educational institution के अंदर, क्लास के अंदर आपको लगता है कि these are the 5 or the 6 people who are needing guidance in specialized guidance and counseling, तो उन 5 का नाम आप उनको, अपने काउंसलर को, स्कूल के अंदर जो काउंसलर है उनको रेफर कर दीजिए, एंड काउंसलर विल लुक। अगर काउंसलर को लगता है कि दे आर नॉट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो फिर वो किसी और अच्छे स्पेशलाइज्ड काउंसलर से बात करेगा। और फिर कुछ ट्रेड्स हैं काउंसलर के, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वी शुड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट ट्रेड्स। ये ट्रेड्स ऐसे हैं कि दे बेसिकली ब्रिंग द स्टूडेंट्स क्लोजर टू यू, they provide better feeling in the minds of the student। क्या है? इंटरेस्ट इन पीपल। हम में और आप में अगर कोई इंटरेस्ट दिखाने लगता है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हमें परेशानी के वक्त में हमें थोड़ी सी हिम्मत दिलाता है, if anybody is helping or assisting in our whenever we are in need of that, definitely a positive bond is established between the two। that is very important। और जब बॉन्ड बन जाता है तो वी आर एबल टू लिसन टू द एडवाइजेस ऑफ दैट। पेशेंस, टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज लर्निंग क्या है? लर्निंग इज बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर क्या है कि जब आप बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं तो इट इज अ वेरी स्लो एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। Behaviors are not changed overnight, they take time। that is why teachers should demonstrate patience। a change will reflect in the student's personality, he or she will achieve better result one day। I am observing, I am guiding, I am giving assistance to that, and I have the confidence, I have the patience। सबका आपको लगेगा कि मैं खामोखा की मेहनत कर रहा हूँ, इसमें कुछ फर्क नहीं आ रहा, but patience is also needed from the teachers too। उनकी बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया जाता है क्लासरूम के अंदर, because some behaviors are related to the developmental stages। कुछ स्टेज एज होती है उसमें ही वो बिहेवियर शो करते हैं, वो एज निकल जाती है तो दे ऑटोमेटिकली गेट रिड ऑफ फ्रॉम दैट। सेंसिटिविटी टू अदर्स एटीट्यूड्स एंड रिएक्शन, दूसरों के बारे में सेंसिटिव होना, उनके रिएक्शंस के बारे में सोचना, उनकी कैपेबिलिटीज को अंदाज करना, उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचना, ये भी एक ट्रेट होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, द टीचर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट इमोशनल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर हमारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है, आप लोग देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मिल गया उनको, जरा सा कोई दुख सामने आता है तो दे बिकम हेल्पलेस एंड होपलेस। इमोशनल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशंस must be in a stable conditions। we must be able to face the challenges with courage, with confidence and with determination, even if conditions are adverse। उस वक्त भी हमें इस इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाई जानी चाहिए, और अगर टीचर इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाता है तो स्टूडेंट्स एडमायर दैट, अप्रिशिएट दैट एंड demonstrate love and affection towards that teacher। ऑब्जेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिविटी, आपकी अप्रोच ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए।
You should give significance to the merit. Relationship अलग है, बिहेवियर अलग है, अचीवमेंट की जब बात आती है तो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी आपके बिहेवियर में डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और सेंस ऑफ ह्यूमर क्लासरूम के अंदर दिखना चाहिए। कभी कभी क्लास में एंजॉयमेंट भी होता है, बच्चों को ऐसी बात कहिए कि उसके अंदर एक हंसी का एटमॉस्फेयर डेवलप हो, उसको हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। एंड देयर आर मेनी टीचर्स हु डेमोन्स्ट्रेट दिस बिहेवियर एंड दे गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स। उनकी क्लास में बड़ा मजा आता है सर, बहुत हंसाते हैं, बहुत पढ़ाते भी हंसाते भी हैं। लाइक दैट ब्रॉड माइंडेडनेस, एक टीचर की व्यू जो है बड़ी ब्रॉड होनी चाहिए, उसका एरिया बड़ा ब्रॉड माइंडेड। He should not be a selfish person, and he should not be a person of any particular thinking. He must take a broad view, because he or she is dealing to the people who are diverse in nature, diverse in temperament, diverse in many characteristic features. आप broader view होनी चाहिए, and no student, every student must feel he is very close to me. इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, हम ये नहीं कहते कि टीचर इंटेलिजेंस नहीं होते, मैं ये कहता हूं कि द टीचर्स शुड यूज देयर इंटेलिजेंस इन डीलिंग द स्टूडेंट्स। उनकी डीलिंग में इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। इंटेलिजेंटली स्टूडेंट मस्ट बी डील इंटेलिजेंटली, ए वेल एडजस्टेड पर्सन। बहुत सारे लोग होते हैं, इफ यू लुक टू देम, कि आपको देख करके लगता है कि दिस इज अ पर्सन हु इज अ वेल एडजस्टेड पर्सन। खुशी उसके चेहरे से लगती है, स्मार्टनेस उसके चेहरे से नजर आती है। ये these are the signs which basically makes a person closer to the teachers. Must be a student. Teacher should also be a student throughout his life, because it is the knowledge which makes you different from others. It is the knowledge based on which students show respect to them. आप पढ़ाइए, हम पढ़ाते हैं जाकर के, अगर स्टूडेंट को लगता है कि दिस टीचर इज गिविंग द बेस्ट मटेरियल, डूइंग हिज बेस्ट एफर्ट, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट and showing concern for all students, and he is interested in see the achievement of the student, definitely you will be considered as an effective teacher, and you will enjoy the respect, and you will be a popular teacher in the institution. ये कुछ ट्रेड्स हैं, अगर ये ट्रेड काउंसलर के पास नहीं है तो कोई उनके पास काउंसलिंग के लिए नहीं जाएगा। अगर वो बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, उसके अंदर पेशेंस नहीं है, जाओ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दूसरों के बारे में सेंसिटिव नहीं है, कोई प्रॉब्लम में है, होने दीजिए। इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, खुद ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखाता है, सेंस ऑफ ह्यूमर उसके करीब ही नहीं है, ब्रॉड माइंडेड नहीं, नैरो माइंडेड पर्सन है, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना नहीं जानता है, और उसकी पर्सनैलिटी एडजस्ट नहीं है, तो कौन उसके पास काउंसलिंग के लिए आएगा? Who will come to counseling? So these are some of the traits which are essential, क्योंकि confidentiality is also very, एक और इसमें ऐड कर लीजिए confidentiality। मैं आपको बता रहा हूँ, many students come with their problems to me, और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, अपने घर की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, बिकॉज आई मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दोज स्टूडेंट। उनको पता है कि दिस इज अ टीचर, और ये मैं अपनी कॉन्फिडेंशियल, अगर आपको लगता है कि आप ये पर्सन ऐसा है कि जो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेगा, तो डेफिनेटली वो भी आपकी अपनी बात रखेगा। जब अपनी बात कोई नहीं रखेगा आपके सामने, तो फिर व्हाट टाइप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग? काउंसलिंग तो कहते ही इसे 1-to-1 सिचुएशन में काउंसलर आपको समझता है। जैसे डॉक्टर आपसे पूछता है कि अच्छा हाँ बुखार आ रहा है, कब से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या खाया था, वो बहुत सारी चीजें। इसी तरीके से काउंसलर जो है वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सुनता है, और जब लगता है कि दिस इज अ पर्सन हु इज एड्रेसिंग टू माय प्रॉब्लम, देन ही डेफिनेटली इंडल्ज इन दैट काउंसलिंग, और फिर वो अपनी चीजों को बताता है, और जब अपनी चीजों को बताता है तो उसका सोल्यूशन भी आता है निकल करके। So this is what I wanted to say to you. This is the significance of the guidance and counseling. मैं एक चीज आपको एंड में बता देता हूँ, because teaching is basically related. First of all, I told you कि I will tell you the significance of guidance and counseling. I started with the
my discussion with certain statistics, which highlight the significance of guidance and counseling, because many people, many students, including the teachers, are suffering from stress, anxiety, and frustration. And the people who are suffering from stress, anxiety, and other problems, they are not expected to achieve up to their potentials. तो पूरा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और इस पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को फुलफिल करने के लिए वी नीड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जब गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं तो फिर स्कूल के अंदर टीचर्स आर आल्सो देयर एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग टीम इज आल्सो देयर, and joint effort of the teachers, non-teaching staff, and guidance and counseling team is basically responsible for creating an environment of help and support which is needed for better achievement of the student. और टीचर का सबसे बड़ा काम यह है कि उसको सबसे पहले काम जो उसका है वो टीचिंग का काम है. He should concentrate on the teaching. He should provide the best material in a best systematic manner, presenting in a systematic manner, providing motivation to the student, having a plan for that, implementing that plan, and finally analyzing the plan कि how much he or she is successful. तो हमारे institutions के अंदर guidance and counseling की कमी है. That is why हमारी society के अंदर सबसे ज्यादा under achiever पाए जाते हैं. टैलेंट है स्टूडेंट के अंदर लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आते. This is what all about which I wanted to share with you. If you have any query, any question, then you can discuss with me. Thank you very much, sir. All questions from Nitin question. First generation learner. What is the first generation learner mean? You are asking question? Someone is asking, sir. Nitin question. Okay. Your voice is very weak. Actually, sir, someone asking the first generation learner means. First generation learner means whose parents are not educated. Their education in first generation learner, they are called the first generation learner. Their parents were not educated. They were illiterate. But they are in the schools. They are in the school. So ये first generation learners कहलाते हैं. Their parents are not educated. They never entered in the schools, or their no family members entered in the schools. They have entered in first. They have entered in the school condition. They are called the first generation learners. Sir, other question in the chat box. जी. Sir, other question in the chat box. My question, someone is asking. Farsana Kumar Dikshit. My question is, at university, some teachers are being given many administrative responsibilities as he is doing the same in the perfect manner. Others are ignored that they can not do it. So you also want to engage in administrative responsibility? No, sir. It's like that. Some teachers are being given many administrative responsibilities because they can do it. And other teachers are just ignored that they cannot do the thing perfectly. As a result, the teacher who is doing the work, that means there might be some mistake that may so happen in the course of that means the program, and he or she may be in the badge book of the authority that it is being given to you, and mistakes arises. But those who have not been given to any kind of work, they are just enjoying their life. Yes. Yes, you are raising a very important point. It is basically a problem. If we look from the point of view of administrator, then any administrator, even if you are given the responsibility to administer any educational institution or any organization,
then the first task of that administrator is to identify who are the people who can carry out the responsibilities in a better manner. Okay. And there are few people or less people in any organization, in any schools, who basically take more responsibilities and others are also enjoying. This make word, I would add one word here. Delegation of responsibilities must follow. In delegating the responsibility, we need to follow the objectivity also. We should not leave some people freely, rather we should also engage them. We should also engage them. So it is an administrative problem basically, sir. Yeah. So that is not happening in many cases. That some people are doing day and night the work, and other people are just enjoying, and they will search that where you have done the mistake. Okay. So that is the problem. There are many positives and the negative associated to that. The people who are associated in the work, they 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 basically enjoy the respect, recognition in that institution, but they suffer many stress and anxiety also. Yeah. So that is the problem. On the other hand, and it happens in every slowly and slowly, those teachers should try to get dissociated from that assignment also, or they should also take or discuss with the principal or with the authorities if some other peoples are also having the talent, and it is better to share the responsibilities of with other also. तो Thank ये you so तो much. एडमिनिस्ट्रेटर के साथ डिस्कस करके ही ये सब चीजें हो सकती हैं सर. Thank you so much. Yes, I think, sir, no more questions. Sir, what about the feedback link? Yes, I will send to you the feedback link the last day of the workshop. Thank you very much, everyone. Dear participants, I would like to make moment to express my sincere gratitude to everyone. Firstly, I want to thank the Professor Abid sir who sharing their knowledge and expertise with us. They have been encouraging and provided excellent support throughout the training, making it enjoyable and fruitful learning experience. My fellow trainees, thank you for your participations, engagement, and willingness to the learn alongside me. Your questions, comments, and feedback have been instrumental in creating collaborations of dynamic and learning. Thank you very much, everyone, for coming these sessions, and thank you, sir. Thank you, Avi, sir, and every participant. Thank you, Rafiq sir. Also, Okay, sir. I enjoyed the session. Participants were very involved, and they also raised certain questions. This shows that participants are really listening carefully, and they had certain points in their minds, and they tried to raise those issues in the end. It's a good part of the lecture. So I Okay. appreciate all the participants also. Okay, Thank you very much for giving the Thank you. opportunity to discuss. Thank you very Thank much. you so much. Tomorrow we will discuss about on components of effective teaching by Professor Gunjan Dubey, ma'am, Department of Education. And okay, thank you everyone. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you everyone. Sadia Naeem, thank you very informative. And thank you everyone who are presented here. Maybe possible. Okay, thank you very much. Thank you. See you tomorrow.